Hello friends, again from Navkar. I am CA Maulin Kadikar. Happy to share with all of you that the examination paper of SFM of November 19 was absolutely from the coverage of the Navkar material. Whatever the concept that we discuss in the classroom, from all of them, the questions have been asked in examination. There are few questions which are asked as it is in examination, a few questions with the change in the figures, and all the concepts have been covered, including for the theory. Let us come to the point in which I am discussing the examination paper. In that, first of all, the examination paper style. Institute has kept the examination paper style same as it was last time. Question number 1, compulsory question. Question number 2 to question number 6. Student is required to attend any 4 questions out of these 5 questions. First question is of 20 marks and the remaining questions are also of 20 marks. 20 into 4, that is 80 marks. 80 plus 20, that is 100 marks examination paper. जो पहला क्वेश्चन था वो कंपलसरी था और क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड करने थे. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चंस थे उसमें फ्रेंड्स जो ए और बी था वो प्रैक्टिकल था और जो सी क्वेश्चन था वो थियोरी था. प्रैक्टिकल का वेटेज 16 मार्क्स और थियोरी का वेटेज 4 मार्क्स. जो क्वेश्चन नंबर 4 था दैट वाज एन एक्सेप्शनल क्वेश्चन. ए बी सी सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. सो वी अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट फॉर अ स्टूडेंट एट लीस्ट देयर इज थियोरी टू बी अटेंडेड ऑफ 16 मार्क्स. पहला क्वेश्चन उसमें 4 नंबर का थियोरी और ये जो 4 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं उसमें से सपोज यू आर अटेंडिंग 4th क्वेश्चन, देन इन दैट केस बाकी के जो 3 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको थियोरी क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा जो सी क्वेश्चन होगा. वो 3 क्वेश्चन का 4 नंबर का थियोरी दैट कम्स टू 12 मार्क्स. 12 प्लस ये फर्स्ट क्वेश्चन का 4 दैट कम्स टू 16 मार्क्स का कंपलसरी थियोरी एंड इन दैट केस 84 मार्क्स का प्रैक्टिकल. या तो फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 स्किप करते हो तो आपके लिए थियोरी हो जाएगा 20 मार्क्स का और प्रैक्टिकल जो हो जाएगा 100 मार्क्स का. दैट इज द वे द थियोरी एंड प्रैक्टिकल बाइफर्केशन दैट वी हैव. फ्रेंड्स, इन SFM मॉड्यूल you must have seen that there are number of chapters. However, a few chapters are overlapping in a way that the concepts are taught in one of the chapter only in Navkar material. The questions which have been asked during this examination, for that so we can have bifurcation like this: 24 marks from merger, corporate and equity valuation, 24 marks from portfolio, 22 marks from derivative, 16 marks forex, 10 marks mutual fund, 4 marks VAR value at risk. From the theory chapters, startup finance, debt securitization 8 marks each, financial and corporate policy 4 marks, and from forex 4 marks theory was asked. Now friends, the entire question paper I am giving you a summary that from which chapter which kind of question, and I'll give you the reference number of question and the page number. Question number 1A from merger, basic question of merger. This type of question have been covered in Navkar material. Question number 1C, page number 3. 1B is derivative, forward rate agreement. Page number 77, question number 115, similar question covered by Navkar. 1C, 4 marks theory question, startup finance. It is about the venture capital financing concept
Exact question have been covered. 214 page number, question number 5. Question number 2A, mutual fund, return to the investor. Similar question have been covered in Navkar book, page number 65, question number 2H. 2B, derivative, it is futures contract concept. Similar to this question, page number 17, question number 23. 2C, chapter debt securitization, 4 marks question. Benefit to originator, page number 197, first question. Exactly the same question covered by Navkar. 3A, derivative. In that option seller point of view, the question was required to be solved. Similar to that question, page number 60, page number 91 of Navkar book. 3B, chapter portfolio management, exponential moving average. Similar to this question is provided by ACCA in study material 4.32, page number, first question. 3C, startup finance, chapter 4 marks question. It is about the definition of the startup as per government scheme. Same question is covered by the Navkar material, page number 216, 9th question. 4A, it is a question about raising additional financing and based on that calculation of the market price of equity share. Similar to the question have been covered in Navkar book, page number 48, question number 14E. 4B, forex. In that, a question which has been covered is about decision making about forward and the futures contract, and similar to that question have been covered in Navkar, page number 221, question number 27. It is exactly the same question with even no change in the figures. 4C, value at risk, risk management chapter. Navkar book, page number 194, third question. Question number 5A, portfolio management, CAPM. Similar to the question covered in Navkar, page number 103, 19 number question. 5B, forex, it is overseas project evaluation, capital budgeting question. 8 marks question, similar to that covered in Navkar book, page number 150, question number 84. 5C, financial policy, key decisions which have been included in that is required to be answered. Exactly the same question covered in the Navkar book, page 167, second question. 6A, portfolio management, return and risk of the portfolio. Similar question have been covered in Navkar book, page 105, 25 number question. 6B, valuation of the firm and valuation of equity based on expected cash flow. Similar question have been covered in Navkar book, page 23, question 8G, mergers, acquisitions, corporate and equity valuation. In 6C, there are 2 questions. Either of the answer required to be answered by a student. Debt securitization, 4 marks. Problems in debt securitization. Exactly the same question covered in Navkar book, page number 200, 5th question. Or forex, it is about the international cash management. Similar to that concept have been discussed in the classroom, and related to that the practical questions and the theory have been given. Page number 160, question number 95. Now we are starting with the question paper one by one. Now friends, we are starting with the questions. Question number 1 is compulsory. Candidates are also required to answer any 4 questions from remaining 5 questions. Working notes should form part of respective answers. Now friends, we are starting with question number 1A, 8 marks. A Limited, a listed company, is considering merger of B Limited
which is also a listed company with itself by means of stock swap, that is exchange. B Limited has agreed to plan under which A Limited will offer the current market value of B Limited shares. Additional information, earning is given for A Limited 10 lakhs, for B Limited 2,50,000. Number of shares 4 lakhs and 2 lakhs. P0, current market price of the share 50 and 20. On the basis of above information, you are required to calculate the following. There are 3 questions. First, what is the pre-merger EPS and price earning ratio of both the companies? Second, if B Limited's price earning ratio is 10, what is its current market price? What is the exchange ratio? What will be A Limited's post-merger EPS be? Third question, what must be exchange ratio be for A Limited's pre-merger and post-merger EPS to be same? Now friends, the first question is, what is pre-merger EPS and price earning ratio of both the companies? So answer of the first question will be calculated like this. Calculation of EPS and PE ratio, price earning ratio of both companies before merger. We can start the same with the earning after taxes. Like earning after taxes of A Limited is provided to us. It is an amount of 10 lakhs. Number of equity shares are provided as 4 lakhs. So that will give earning per share. It is 2 rupee 50 paise. Market price of the share is provided to us rupees 50. So we can calculate the price earning ratio. Price earning ratio will be calculated as MPS upon EPS. MPS is 50, EPS is 2 rupee 50 paise. So we can compute the price earning ratio. It will be 20 times. For B Limited, similar working. Earning after taxes is 2,50,000. Number of equity shares 2 lakhs. So EPS will be 1 rupee 25 paise. Market price of the share is 20. So it is 20 divided by 1.25. That is the way we can make the calculation of the price earning ratio. So it is 20 divided by 1.25. That comes to 16 times. So the first question answer is calculation of EPS and price earning ratio of both the companies before merger is done. B question is, second question is, if B Limited's price earning ratio is 10 times, what is its market price of the share? Now for second question, we can say that the MPS is equal to EPS into price earning ratio. For B Limited, earning per share is 1 rupee 25 paise friends. Multiplying with the price earning ratio 10 times, that comes to 12 rupee 50 paise. So the market price of the share is 12.5. The question further says, what is exchange ratio? Now we can see that the question is providing to us initially, A Limited, a listed company, is considering merger of B Limited, which is also a listed company with itself, by means of stock swap. यानी A Limited B Limited को shares दे के acquire करना चाहती है. A Limited is acquiring and B Limited is target company. B Limited has agreed to a plan under which A Limited will offer the current market value of B Limited shares. यानी हमको क्या दे रखा है फ्रेंड्स,
कि जो भी करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है उसके हिसाब से एक्सचेंज रेशियो तय होगा। सो ओवर हियर सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो? सो वी कैन से दैट द एक्सचेंज रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। सिंपल। टारगेट कंपनी का एमपीएस कितना है 20 और एक्वायरिंग कंपनी का कितना है 50, तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा 0.4 और वी कैन से इट इज 0.4:1। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, व्हाट विल बी ए लिमिटेड्स पोस्ट मर्जर ईपीएस बी, यानी कि आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द टारगेट कंपनी ए लिमिटेड का ईपीएस क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको ऐसा नहीं दे रखा है दैट देयर विल बी एन इंक्रीज इन अर्निंग ड्यू टू मर्जर, इसलिए हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे दैट दोनों कंपनी का जो इंडिपेंडेंट अर्निंग है उसका टोटल अर्निंग ऑफ द मर्ज फर्म। सो वी अंडरस्टैंड लाइक दिस दैट ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड पोस्ट एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ ए प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑफ टी डिवाइडेड बाय NA plus NT into ER. Simple. We understand that so the exchange ratio is indicating how many shares are issued by acquiring company for every one share of the target company. टारगेट कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कितने 2 लाख है, सो 2 लाख इंटू 0.4 कितना होगा 80,000 शेयर्स। सो व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, एक्वायरिंग कंपनी का अर्निंग है 10 लाख रुपए, टारगेट कंपनी का है 2.5 लाख रुपए। एक्वायरिंग कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स है 4 लाख, टारगेट कंपनी के 2 लाख इंटू एक्सचेंज रेशियो है 0.40। 0.40 एक्सचेंज रेशियो क्या बताता है कि उनके एक शेयर के सामने हम लोग हमारा 0.4 शेयर देंगे। सो 2 लाख इंटू 0.4 कितना होगा 80,000 शेयर्स। सो द न्यूमरेटर इज 12,50,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000। So that is the way EPS of A Limited will be calculated. 12,50,000 divided by 4,80,000. That comes to 2.6042. Now the third question is, what must be the exchange ratio for A Limited's pre-merger and post-merger EPS to be same? यानी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट फ्रॉम ए लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू आप ये कैलकुलेट कीजिए दैट कितना एक्सचेंज रेशियो वो मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं सो दैट उनका खुद का ईपीएस पोस्ट एक्विजिशन गिरना नहीं चाहिए। दे डू नॉट वांट टू हैव फॉल इन इट्स ओन ईपीएस पोस्ट एक्विजिशन। वी नो दैट से देयर इज नो इंक्रीज इन द अर्निंग ड्यू टू मर्जर। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, we can apply a simple formula for calculation of exchange ratio. It is EPS of B upon EPS of A. टारगेट कंपनी का EPS कितना है 1 रुपी 25 पैसे फ्रेंड्स, और एक्वायरिंग कंपनी का कितना है 2.5 रुपए। तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा 0.5 और वी कैन से दैट इट इज 0.5:1। एंड विथ दैट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। फ्रेंड्स आई टेल यू ऑनेस्टली दैट जो मर्जर का हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है नवकार में, फर्स्ट लेक्चर सिर्फ 2 घंटे का, उसमें हम लोग ये टाइप के क्वेश्चन कवर करते हैं फ्रेंड्स। द क्वेश्चन नंबर 1C इज अ क्वेश्चन दैट वी डू इन नवकार क्लास वर्क, इज कवरिंग ऑल द पॉइंट्स विच हैव बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1B, P Limited is contemplating to borrow an amount of rupees 50 crore for a period of 3 months in the coming 6 months from now. तो 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए बोरो करना है। आई रिपीट इट, 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए बोरो करना है। आई एम रीडिंग इट अगेन। P Limited is contemplating to borrow an amount of rupees 50 crore for a period of 3 months in coming 6 months from now.
The current rate of interest is 8% per annum, but it may go up in 6 months' time. The company wants to hedge itself against the likely increase in interest rate. The company's banker quoted an FRA forward rate agreement at 8.3% per annum. Compute the effect of FRA and actual rate of interest cost to the company if actual rate of interest during the consideration period happens to be 8.6% per annum or 7.80% per annum. Show your working on the basis of months. So friends, now you can understand that this is a question of forward rate agreement जो कि आपके डेरिवेटिव चैप्टर में कवर किया जाता है. It is covered as question number 115, page number 77, derivative analysis and valuation में. Of course, the figures are slightly different, but the concept is absolutely covered. Over here we understand that the question में हमको ऐसा दे रखा है that we want to enter into 6 into 9 FRA 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए. Just for understanding purpose, I am taking the dates into account. Just for understanding purpose, suppose आज का डेट है 1/1/2019, तो आज से 6 महीने के बाद we want to borrow funds for a time period of 3 months. हमको ये टाइम पीरियड के दौरान 50 करोड़ का फंड्स बोरो करना है. We are expecting that the rate of interest will go up, so we want to enter into FRA. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है that the current rate of interest is 8%. However, ये rate of interest का information हमारे कोई काम का नहीं है. This rate of interest information is provided just to misguide us. We have been provided with the information that the FRA was entered upon at 8.3%. Now the question is providing the information that you are required to calculate that what must be the interest cost in two situations. If at all the rate of interest has gone up to 8.6%, and if at all it has reduced to 7.8%. So over here, how to do working, let us understand it. I just repeat the crux of the question. Question में ऐसा दे रखा है that a company is going to borrow an amount of rupees 50 crore after 6 months. 6 महीने के बाद funds borrow करने वाले हैं for a time period of 3 months. It is expecting that the rate of interest is likely to go up. यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो बोरो करने जाएंगे तो उनको लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में ज्यादा होगा. इसीलिए आज ही उन्होंने एक काउंटर पार्टी के साथ फॉरवर्ड रेट का एग्रीमेंट किया है. एट व्हाट रेट फ्रेंड्स? 8.3%. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज OTC डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, जो 1-to-1 नेगोशिएशन से किया जाता है. And over here the bank has quoted the rate 8.3%. So over here we are required to show the answer in terms of the execution. क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा क्लैरिटी दे रखा है कि आपको सारा का सारा कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स करना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू आंसर, लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.6% हो जाता है तो क्या, वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दैट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा वर्किंग नोट जरूरी है. वी अंडरस्टैंड दैट्स इट टुडे आफ्टर 6 months and after another 3 months.
सपोज कि मैंने फॉरवर्ड रेट का एग्रीमेंट किया है. सो बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग लाइक दिस, दैट at this point of time I will go to the bank and I will borrow rupees 50 crore, and at this point of time I will make a repayment of loan 50 crore plus forward rate agreement का rate of interest है 8.3%. so 50 crore into 8.3% into 3 divided by 12. क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रेट का एग्रीमेंट 3 महीने के लिए किया गया है. So the amount of repayment of loan will be calculated as 50 crore plus, so it is 50 crore into 8.3% into 3 divided by 12. So that comes to 1.0375 crore. So the repayment of loan is 51.0375 crore. तो बेसिकली मैं ऐसा सोच के जाता हूं कि इतना अमाउंट मैं बोरो करूंगा, इतना मेरे को रीपेमेंट होगा, whatever may be the rate of interest on that date, I am least concerned. However, यहाँ पे एग्जीक्यूशन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, लिसन केयरफुली, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.6%. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, व्हेन यू गो टू द बैंक मैनेजर विल टेल यू लाइक दिस, दैट से वी विल लैंड यू, लिसन केयरफुली, वी विल लैंड यू एट द रेट ऑफ 8.6%. However, you have to borrow only such an amount so that your repayment liability after 3 months is 51.0375 crore. In a way that say principal plus interest मिला के आपका 51.0375 करोड़ हो, उतना अमाउंट आप बोरो कीजिए. So what happens that say suppose you have borrowed X amount, तो X into rate of interest is 0.086 into 3 divided by 12 is equal to 51.0375 crore. So what happens that say the X is equal to 51.0375 crore divided by rate of interest 8.6% पूरे साल का है, तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा फ्रेंड्स, 2.15%. So 1.0215. So 51.0375 crore divided by 1.0215. So that comes to 49 crore 96 lakhs 32,893. यानी मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतना अमाउंट ही बोरो करूंगा. किससे? बैंक से. एक्चुअली आई एम इन नीड ऑफ हाउ मच अमाउंट, आई एम इन नीड ऑफ 50 करोड़. तो कितना शॉर्टफॉल हुआ फ्रेंड्स, जो भी अमाउंट का शॉर्टफॉल है so the shortfall is 3,67,107. तो ये जो अमाउंट का शॉर्टफॉल है, दैट अमाउंट विल बी गिवन बाय बैंक टू मी. आई रिपीट इट अगेन. व्हाट हैपेंस एट से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्या होगा फ्रेंड्स, इफेक्टिवली आपका कॉस्ट हमेशा 8.3 ही बैठेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही ज्यादा चल रहा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही कम चल रहा है. सो व्हाट हैपेंस एट से ओवर हियर, so the bank will give you the loan at the rate of 8.6%. पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इतना अमाउंट ही बोरो करना है जिसकी वजह से आपको इतना अमाउंट का रीपेमेंट लगेगा. एंड 50 करोड़ और ये अमाउंट का जो भी डिफरेंस होगा वो बैंक आपको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में सेटल करके देगा. सो दिस इज द वे सो द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट वर्क्स. So how we will do answer, I just explain you that from examination point of view. हम लोग ऐसा करेंगे, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन
एट द रेट फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी ये जो फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके बेसिस से रीपेमेंट ऑफ लोन क्या होगा वो सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट लायबिलिटी एट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.6%, उसके बेसिस से ये अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ₹50 करोड़ एंड अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2। इसका जो डिफरेंस है वो बैंक आपको दे देगा अगर वो लोग ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.8%, तो उसमें क्या होगा, द स्टेप नंबर 2 विल हैव आंसर ग्रेटर देन 50 करोड़। उस केस में आपको बैंक से ज्यादा बोरो करना है और जितना इंक्रीमेंटल अमाउंट आपने बोरो किया वो आपको बैंक को दे देना है। Why? Because later on the bank is charging say the rate of interest to you at the rate of 7.8%, even though they had committed to you that we will charge you 8.3%. This is the way the forward rate agreement works. आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा definitely friends that forward rate agreement is a kind of hedging that may work in favor to you in a way that say यहाँ पे जैसे कि first question में it works in favor to you. It may have adverse effect if at all the things are different than what you had anticipated. So from examination point of view हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे वो अभी मैं आपको बता के that is से लिख के बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 जिसपे हम लोग कैलकुलेट करेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन एट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो वी विल हैव वर्किंग लाइक दिस। स्टेप नंबर 1, calculation of repayment of loan at the rate forward rate of interest। कैसे करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो इट इज 50 करोड़ प्लस 50 करोड़ इंटू 8.3% into 3 divided by 12. So it is 50 crore plus 1.0375 crore. That comes to 51.0375 crore. That is our step number 1. उसके बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा एट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ present value of repayment of loan at the rate current rate of interest। फ्रेंड्स हमारे एग्जाम्पल में करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.6%। सो व्हाट विल हैपन, रीपेमेंट ऑफ लोन इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। रीपेमेंट है 51.0375 करोड़ इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वेरिएबल असाइन किया जाता है लाइक टू प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.6% इंटू 3 डिवाइड बाय 12। सो इट इज 51.0375 करोड़ इज इक्वल टू 1.0215x। ये कैसे फ्रेंड्स, 0.086 इंटू 1/4। So X amount is 51.0375 crore divided by 1.0215. With that, so the answer comes to 49 crore 96 lakhs
32,893. सो इतना अमाउंट ही आपको बोरो करना है बैंक से, जिसका रीपेमेंट आपको वही लगेगा जो पहले लगने वाला था, 51.370375 करोड़. So step number 3, difference. It is 50 crore minus 49 crore 96 lakhs 32,893. That comes to rupees 3,67,107. Bank will pay to company. फ्रेंड्स, जो हमारा सेकेंड आंसर है उसमें ऑब्वियसली ये फर्स्ट वर्किंग नोट बनाने का वापस जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू रिमेन सेम. ये सेकेंड वर्किंग नोट हमको बनाना पड़ेगा. दैट इज स्टेप नंबर 2 विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वी कैन से दैट से स्टेप नंबर 1, इन दैट से देयर इज नो चेंज. स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? इट इज रीपेमेंट ऑफ लोन is equal to principal plus interest. Repayment of loan will be 51.0375 crore. Principal is X plus X into rate of interest is 7.8% and time period is 3 months. Rate of interest is 7.8% and the time period is 3 months. So X will be calculated as 51.0375 crore divided by 7.8% पूरे साल का है, तो 3 महीने का होगा फ्रेंड्स 1.95%, so 1.0195. So it is 51.0375 divided by 1.0195. So that comes to 50 crore 6 lakhs 13,046. So this is the amount that say you are going to borrow. जितना आपने excess borrow किया है, so that you are required to pay to the bank. तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? वापस डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन का स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस. It is 50 crore 6 lakhs 13,046 minus 50 crore. That comes to rupees 6 lakh 13,046. तो बेसिकली कंपनी ने क्या एक्सेस अमाउंट बोरो किया है और उन्होंने 50 करोड़ ऊपर का अमाउंट उन्होंने बैंक को दे दिया है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से कंपनी विल पे टू बैंक. दिस इज द वे से द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन होगा. क्वेश्चन नंबर 1C, स्टेट ब्रीफली the basic characteristics of venture capital financing. Now again friends, this is a question from Navkar material from the chapter of startup finance, page number 214. In that question number 5 is the same question. Explain characteristics of venture capital financing. In that, long term time horizon, lack of liquidity, high risk and equity participation. So these are the points that you are required to write. Question number 2A, Cinderella Mutual Fund and approved mutual fund sponsored open-ended equity oriented scheme Rudolph Opportunity Fund. There are 3 plans under the scheme, namely Dividend Reinvestment Plan A,
bonus plan B, growth plan C. At the time of initial public offer on 1/4/2009, Mr. Amit, Mr. Ashish and Mr. Arun, three investors invested rupees 2 lakh each at the face value of rupees 10 per unit and chosen plan B, C and A respectively. Particulars of the fund over the period are as follows. Date is given, rate of dividend is given, bonus ratio is given, NAV per unit is given for A, B and C plan. On 31st of July 2019, all the three investors redeemed all the balance units. Consider the following. Long-term capital gain is exempt from income tax. Short-term capital gain is subject to 10% income tax. Security transaction tax is 0.2% only on sale or redemption of units. Ignore education cess. You are required to calculate effective yield per annum, annual rate of return of each of the investors. Suggest name of the investor with highest effective yield per annum with the difference to his nearest investor. Show your calculations up to 2 decimal points. Friends, this question is similar to a question that we do in our chapter of mutual fund, page number 65, question number 2H. Over here, friends, information is provided about three investors. They have made investment in different plan: dividend reinvestment, bonus and growth plan. The question is providing that you are required to calculate the return for individual, that is for each of them. Then we are required to make the calculation of the difference. Going one by one, first of all, calculating the return for an investor who has invested in dividend reinvestment plan. If at all investor has made investment in dividend reinvestment plan, then in that case, how to make the calculation of return? We can say that first of all, we will calculate the number of units that investor must be having on the date on which investment is redeemed. जिस दिन इन्वेस्टमेंट रिडीम किया है, that is 31st of July 2019 in this example, उस दिन इन्वेस्टर के पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उसका कैलकुलेशन किया जाएगा. क्योंकि बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट जितना भी डिविडेंड इन्वेस्टर को दिया जाता है वो इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया है कि वो आप लोग री इन्वेस्ट करते जाइएगा. सो द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द इन्वेस्टर वुड हैव वुड बी मोर at the time of redemption. तो सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स का कैलकुलेशन, उसके बाद सिंपल वर्किंग नोट्स कैलकुलेट किया जाएगा अबाउट कैपिटल गेन टैक्स. बिकॉज वी कैन सी दैट 25th of March 2019 यानी कि विद इन लास्ट 1 year ऑफ द रिडम्पशन जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट हुए हैं उसके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा. देन वी अंडरस्टैंड we will make the calculation of the time period for which the investment held by the investor. Then we will make the calculation of the income that the investor is able to earn. और लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे effective yield. Like that, we are required to make the calculation of the answer for dividend reinvestment. बोनस प्लान में सीक्वेंस सेम रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, कैपिटल गेन टैक्स. टाइम पीरियड का वर्किंग नोट वापस करने का जरूरत नहीं होगा. वाई? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर इनकम और रिटर्न. ग्रोथ प्लान में वी डोंट हैव टू डू टू मच वर्किंग. वो कैसे किया जाएगा वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं. तो सबसे पहले डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें फर्स्ट वर्किंग नोट दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इन्वेस्टर वुड हैव एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स.
So friends, the first working note will be like this: calculation of return for dividend reinvestment plan. उसके लिए what we are required to do, working note number 1, calculation of number of units that investor must be having at the time of redemption. जैसे हमको दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट किया है ऑन 1/4/2009, इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख रुपए का. क्वेश्चन में ऐसा प्रोवाइड करके रखा है दैट इन्वेस्टेड ₹2 लाख ईच एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10. यानी कि अगेन क्लैरिटी है कि जब इन्वेस्टमेंट किया था तभी फेस वैल्यू पे उसका इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि 10 रुपए पे. नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड एट 20,000 ऑफ कोर्स, दैट इज 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 रुपए का फेस वैल्यू. सो बैलेंस विल बी अगेन 20,000 नंबर ऑफ यूनिट्स. Then information is given that say 31st of July 2013. That is the date at which 10% dividend is distributed or given by the mutual fund. So what will happen? 20,000 into 10, ये face value हो गया, multiplying with the rate of dividend 10%. So 20,000 रुपए का dividend. उस दिन का NAV है friends 30.7. So what will happen? It is 20,000 divided by 30.7. ऐसा करके we will calculate कि कितना number of units allot होंगे. So 20,000 divided by 30.7. So that comes to 651.47. There is a good clarity made in the question that number of units will be calculated based on only 2 decimal units. यानी सिर्फ 2 डेसिमल तक ही कैलकुलेशन करना है, प्लस 20,000. सो दैट कम्स टू 20,651.47. नेक्स्ट जो डिविडेंड है फॉर दैट से द डेट इज 31st of March 2014. रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रोवाइडेड टू अस 35%. सो क्या होगा फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंटली 20,651.47 इंटू 10, ये क्या हो गया फ्रेंड्स? फेस वैल्यू हो गया. मल्टीप्लाइंग विद द रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है हमको 35%. सो इंटू 35%. सो 20,651.47 इंटू 10 इंटू 35%. दैट कम्स टू 72,280.15. इतना डिविडेंड हो गया. उस दिन का NAV हमको दे रखा है 58.42 फ्रेंड्स. So what will happen at that rate? So this amount of dividend will be reinvested. So it is 72,280.15 divided by 58.42. So investor will get 1,237.25 units. तो उनका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल इंक्रीज टू 21,888.72. And so on, we will make the calculation of the number of units that will be allotted to the investor further. So friends, this is the way the first simple working note will be prepared. You can see that based on this number of units into 10, that is the face value of the investment into rate of dividend, तो ये amount of dividend हो जाएगा. उस दिन का NAV के मुताबिक आपको इतना नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे. दैट इज द वे विल मेक द कैलकुलेशन. तो लास्ट डेट को दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर गोइंग टू रिडीम. उस दिन का NAV हमको दे रखा है क्वेश्चन में 53.75. आफ्टर दिस फर्स्ट वर्किंग नोट, सेकेंड वर्किंग नोट विल बी कैलकुलेशन ऑफ लेट अस से कैपिटल गेन टैक्स. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट एंटायरली एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज सब्जेक्ट टू 10% ऑफ इनकम टैक्स. डेट ऑफ रिडम्पशन इज 31st of July 2019. So minus 1 year is 31st of July 2018. So we understand that say 31st of July 2018 के बाद सिर्फ ये नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट हुए हैं.
So this number of units are subject to capital gain tax. We can see that so the redemption value is 53.75 and so the NAV is 48.10 जिस दिन वो allot हुआ था. So क्या किया जाएगा friends? Redemption value of investment, it is 978.94. This is the number of units into NAV per unit is 53.75 less purchase price. ये नंबर ऑफ यूनिट्स जब अलॉट हुआ तो उसका वैल्यू था 47,087.12. We understand that so the security transaction tax is an expense, however it is not allowable from tax point of view. So difference of this is what we understand is the short term capital gain. उसका 10% कैलकुलेट किया जाएगा and that is short term capital gain tax payment. ऐसा करके हमको सेकेंड वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है. So we understand that it is 978.94 into 53.75. That comes to 52,618.03 minus 47087.12. That comes to 5530.91. उसका 10%. That comes to 553.09. So we understand that say 553.09 is the capital gain tax. उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3, that is calculation of number of months for which the investment must have been held. So it is 1st of April 2009 to 31st of March 2019. क्योंकि 31st ऑफ जुलाई 2019 को इन्वेस्टमेंट रिडीम किया है तो अप्रैल से मार्च दैट इज 1 ईयर. सो 19 to 20, 21 ऐसा करके वी अंडरस्टैंड ये 10 साल हो जाएंगे. 1 year is consisting of 12 months, so this is 120 months. 1st of April 19 to 31st of July 2019. So it is April, May, June, July और additional 4 महीने. That is the way this is 124 months. Then we understand that say the working note number 4, that is calculation of income. इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? दैट इज रिडम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. वहां से हम लोग शुरू करेंगे. ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन हमारे पास इतने नंबर ऑफ यूनिट्स है. दैट इज 24,522.5 मल्टीप्लाइंग विथ NAV इज 53.75 लेस इसका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाएगा. सो 24,522.5 मल्टीप्लाइंग विथ 53.75 that comes to 13,18,084.38. Security transaction tax is 0.2%. So 0.2% comes to 2,636.17 less capital gain tax, which is required to be paid 553.09 less investment. Investment was made of rupees 2 lakhs. Friends, simple over here we are required to go with the concept कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 2 लाख रुपए का. जब हमने इन्वेस्टमेंट रिडीम किया आफ्टर 124 मंथ्स हमको कितना पैसा मिला? हमको 13 लाख मिला. उसमें से STT पे किया, उसमें से हमने कैपिटल गेन टैक्स पे किया और हमने इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख का. इसका डिफरेंस हमारा इनकम हो जाएगा. सो द अमाउंट ऑफ इनकम विल बी 13,18,084.38. So it will be 11,14,895.12. सो ये हमारा इनकम हो जाएगा. लास्ट में फिर हम लोग एक फॉर्मूला रखेंगे और उसके बेसिस से हम लोग रिटर्न टू द इन्वेस्टर कैलकुलेट करेंगे.
Now friends, the last thing that we have to do is finding the return. Return will be calculated by using the simple formula. It is income upon investment into 12 divided by n into 100. As far as income is concerned, it is 11,14,895.12. Investment made of rupees 2 lakhs into 12 divided by 124 months into 100. That is the way we are supposed to find the return. Income upon investment into 12 divided by n, in order to convert that into annualized term, into 100 for getting answer in percentage term. So the return will be 11,14,895.12 into 1200 divided by 2 lakhs divided by 124. That comes to 53.95%. That is the return for the first investor who has made investment in dividend reinvestment plan. Now for bonus plan, the same sequence we are required to follow, with the only change that we are required to make the calculation of all working except the time period, because we already have it. Otherwise the rest everything will remain same. So now friends, calculation of the return for bonus plan. उसमें फर्स्ट पर की नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इन्वेस्टर इज हैविंग एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. We understand that say again the investment is made on 1st of April 2009. Units allotted is based on the investment, that is an amount of 2 lakhs. Face value is 10 यानी 20,000 यूनिट्स. तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बैलेंस यूनिट्स हो जाएगा. That is 20,000 number of units. Then information is provided that on 31st of March 2014, bonus is 5 for every 4 units held. उस दिन का NAV क्या है वो हमको देखने का जरूरत नहीं है. So what will happen, it is 20,000 into 5 divided by 4. So 25,000 number of units will be allotted in form of bonus. So 20,000 units already थे, उसमें 25,000 ऐड किए जाएंगे, तो आपके पास बैलेंस हो जाएगा 45,000 number of units. The next date is 31st of March 2018. So it is 45,000 into bonus का रेशियो है 1 for every 3 units held. So it is 1 by 3, तो 15,000 number of units. 45,000 ऑलरेडी थे, उसमें 15,000 ऐड किए जाएंगे, तो आपके पास बैलेंस हो जाएगा 60,000 number of units का. Next, it is 25th of March 2019 again. It is 1 for every 4 units held. So it is 60,000 into 1 divided by 4, यानी 15,000 number of units. 60,000 number of units ऑलरेडी थे आपके पास, उसमें 15,000 ऐड हो जाएंगे. So that comes to 75,000 number of units. So this is the number of units that you would be having at the time of redemption. उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स. अगेन विद इन लास्ट 1 ईयर जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट हुए हैं उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन का टैक्स पे करना पड़ेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, it is 15,000 number of units multiplying with redemption value is provided to us 22.98 less purchase price. बोनस यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0. सो जितना भी रिडम्पशन वैल्यू है उतना हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा, और उसके ऊपर हम लोग कैपिटल गेन का टैक्स पे करेंगे एट द रेट ऑफ 10%. So we understand that it is 15,000 into 22.98. That comes to 3,44,700. 3,44,700. उसका 10%.
34,470. This is the amount of tax that you are required to pay at the time of redemption. Then we understand that so the time period of holding has already been calculated. It is 124 months. So we will make the calculation of the income. So calculation of the income will be like this. उसमें लिखा जाएगा सबसे पहले redemption value of the investment. कितने number of units है हमारे पास at the time of redemption? 75,000. 22.98 is the price at which it will be redeemed. So 75,000 into 22.98, and that comes to 17,23,500 less security transaction tax 0.2%, that comes to 3,447 less capital gain tax, it is 34,470 less investment which was made an amount of rupees 2 lakhs, क्योंकि 2 लाख हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था. ये सारा कुछ रिडम्पशन वैल्यू में से डिडक्ट किया जाएगा and we will get a kind of income. So the amount of income that say we will get is 14,85,583. उसके बेसिस से हमारा लास्ट वर्किंग होगा that is a return. Return is equal to income upon investment into 12 divided by n into 100. Income is 14,85,583 divided by 2 lakhs into 12 divided by 124 into 100. So the return that say we will be able to get is 71.88%. This is a return in case of bonus plan. Now last, calculation of the return for growth plan. Friends, in case of growth plan हम लोग directly return का calculation कर सकते हैं. We understand that in case of growth plan there are no intermediate number of units allotted to the investor. क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको इनिशियली अलॉट किए थे उतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास होते हैं जब आप अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हो. सो ग्रोथ प्लान का कैलकुलेशन फ्रेंड्स, इट इज बेटर दैट से यू डू ऑन पर यूनिट बेसिस इफ एट ऑल ओनली रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड. पर यहाँ पे से हमको फाइनल कंपैरिजन भी देना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा वर्किंग करेंगे. रिटर्न का कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे होगा फ्रेंड्स? It is income upon investment into 12 divided by n into 100. Now income में क्या किया जाएगा friends? We understand like this, that redemption value of investment, it is 2 lakh divided by 10, यानी इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको अलॉट किए थे into 82.07 लेस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. इसका हम लोग 0.2% पे करेंगे. टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इज सब्सटेंशियली मोर देन 1 ईयर, तो कैपिटल गेन टैक्स का तो कोई पॉइंट ही नहीं आता है. उसके बाद क्या करेंगे? लेस इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज द अमाउंट दैट से वी हैव इन्वेस्टेड? इट इज एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs. और हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? हमारे पास इनकम का आंसर आ जाएगा. That income will become numerator divided by investment. Investment कितना है? 2 लाख रुपए का. So what will happen over here? It is 2 lakh divided by 10, number of units 20,000 into 82.07. That comes to 16,41,400. So into 0.2%, that comes to 3,282.80. So 16,41,400 minus 3282.8
minus an amount of rupees 2 lakhs. That comes to 14,38,117.2. So the income is 14,38,117.2 divided by 2 lakh, that is investment, into 12 divided by 124 into 100. So into 1200 divided by 2 lakhs divided by 124, that comes to 69.59%. ऐसा करके हमको रिटर्न का कैलकुलेशन करना है ना फ्रेंड्स. सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, सजेस्ट नेम ऑफ द इन्वेस्टर विथ हाईएस्ट इफेक्टिव यील्ड पर एनम with the difference to his nearest investor. Show your calculations up to 2 decimal points. जो भी हमने रिटर्न्स किया है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट का, बोनस और ग्रोथ प्लान का, इन दैट वी कैन सी दैट से बोनस प्लान का सबसे ज्यादा रिटर्न है. अमित नाम के इन्वेस्टर ने बोनस प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है एंड आशीष नाम के इन्वेस्टर ने ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से द नेम ऑफ द इन्वेस्टर हु इज एबल टू मेक द हाईएस्ट रिटर्न इज अमित. रिटर्न परसेंटेज टर्म में है 71.88 एंड 69.59. सो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 2.29%. तो बोनस प्लान के इन्वेस्टर अमित को 2.29% का ज्यादा रिटर्न है. अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में कंपैरिजन करें तो एब्सोल्यूट टर्म में अगेन इट इज हैविंग द हायर रिटर्न बाय एन अमाउंट ऑफ 47,465.80. ऐसा करके हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं.